This conference will now be recorded. Okay, today's agenda to understand about the concept of domain with ESXi environment, right? Domain in vSphere 7.0. Just wanted to know about how much you compatible with domain services, guys. I have no idea, sir. Sorry. Okay. So you can say that domain is basically a backbone of our VM environment. Not only for the VM, हर एक organization के case में, you know that they must need to establish a domain services. They must need to install the Active Directory services to control and manage the environment. In case of VMware, in case of vSphere, we have a 4 different part to understand about the domain services. चार important tasks रहते हैं domain के, in case of our what we can say that in case of our domain manager, in case of our VMware vSphere environment, क्या क्या है वो चीज हम देख लेते हैं. The first one is for name resolution. Second, another important part, name resolution के साथ साथ अगर हम बात करें तो we need to use our domain services for users and permissions. Next, we'll also discuss the usage of domain, manage NTP services, and last one is use to install vCenter server. Okay, so these 4 points can help us into to manage our domain services, which is really important. Means अगर आप बात करें domain, without domain, so we don't have option to install vCenter server या फिर उसके user के management की बात करें तो without domain वो possible नहीं है. So that's why we'll start from the very basic कि domain setup कैसे किया जाता है and how we can assign the domain to our ESXi vSphere 7.0. Not only for the 7.0, किसी भी domain services को establish करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? At least we just need to install a domain to manage and control the services of our vSphere 7.0. So let me connect my. This is our ESXi host जो हमने install किया था. And meanwhile, we need to install Windows Server 2012 as well. Because with the help of Server 2012, we are able to connect and control the VMware environment. Have you heard about how to install Active Directory? Yes, sir. Great. May I know the usage of Active Directory services? Just basic understanding. यूसेज मतलब यूसेज तो ऐसा सच पता समझाना मुश्किल है, लेकिन हाँ मतलब एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पता है कि डीसी एडीसी कैसे होएगा, फॉरेस्ट क्या होएगा. सर्विसेज सब जैसे सर एलडैप सर्विस भी होती है उसके लिए. हाँ, एलडैप वगैरह तो काफी यूनिक चला जाएगा. Just wanted to know about the understanding of our AD. That's it. है ना? LDAP, DHCP, DNS, lots of things are available. मैनेज सर, यूजर मैनेज, ग्रुप मैनेज, ओयू मैनेज करने के लिए ग्रुप, उसके लिए एडी हम लोग इंस्टॉल करते हैं मेनली. तो सर ठीक है. बेसिकली वी जस्ट वांटेड टू नो अबाउट कि जो ये अपने पास vCenter सर्वर इन्वायरमेंट, सॉरी डोमेन इन्वायरमेंट है, वो ESXi को किस तरीके से हेल्प करेगा. द मेन मोटो इज हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ
how to control our vSphere environment. तो अभी अपने पास एक डोमेन कंट्रोलर है, एक vSphere है, मींस ESXi होस्ट है, एंड वी आर प्लानिंग टू ऐड आवर vSphere विद डोमेन कंट्रोलर. एजेंडा हमारा ये है पहला, और जो पॉइंट्स हैं हमने पॉइंट्स आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन यूज इट और क्या क्या ऑप्शन इसमें रहता है, वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सर दिस AD एंड डोमेन कंट्रोलर पूरे एक ही सर्वर में आता है या इट्स AD इज अ नीड अ सर्विस. सेपरेट? AD इज अ सर्विस. जब आप AD इंस्टॉल कर लेते हैं तो सेम सर्वर हमारा डोमेन कंट्रोलर कहलाने लगता है. जब आप ओके. AD इंस्टॉल करते हैं ना, विच इज कंसीडर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर. सर अब जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट नेम रेजोल्यूशन लिखा, तो नेम रेजोल्यूशन मतलब स्टैंड्स फॉर DNS, लाइक उसके DNS में एंट्री होनी चाहिए, वो है नेम रेजोल्यूशन. Name resolution, yes. Name resolution is basically related to the IP to the name to the IP टू IP. द नेम, वैसे वर्षा मतलब दोनों का काम हो जाता है. वाइस वर्सा. यस. अभी अपने केस में हमने इस्टेब्लिश किया है एक ESXi होस्ट, राइट, एंड वी आर एबल टू एक्सेस अवर ESXi थ्रू द नेम, थ्रू द IP एड्रेस 1.15. बट अगर हम बात करें अपने डोमेन नेम रेजोल्यूशन के बाद, आप अपने ESXi को नेम के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट IP एड्रेस याद करना थोड़ा सा मुश्किल है. थिंक यस अबाउट, सर. यू आर वर्किंग एज एडमिन, VM एडमिन, ठीक है, और चलो वी आर इन ट्रेनिंग, राइट, तो ज्यादा से ज्यादा हम 2 ESXi इंस्टॉल करेंगे या 3 ESXi. इससे ज्यादा ESXi की नीड नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज वी आर जस्ट लर्निंग ना. हमें तो पता होना चाहिए कि सेटअप कैसे होता है. थिंक अबाउट द रियल इन्वायरमेंट, थिंक अबाउट द आवर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट. उसमें तो 15 से 20 ESXi रहती है. As per the requirement, some clients contain up to 15, more than 15 ESXi hosts. It's really difficult कौन से डिपार्टमेंट की VM कौन सी ESXi में रन कर रही है. Got it what I'm saying? यस सर. So what you need to do, अभी अपने पास यहाँ पे think about our production environment, कि आप एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और you have a multiple ESXi. अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल ESXi है, और आपको पता है कि बिकॉज यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, तो आपको पता है कि नहीं, इसमें जो मैंने मशीनें तैयार कर रखी हैं विच इज अप्लीकेबल फॉर HR, सेग्रीगेशन कर रखा है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. सेग्रीगेशन के थ्रू आप आसानी से चीजों को रिजॉल्व कर पाएंगे. इसमें हमने IT की वर्चुअल मशीन रख रखी है, इसमें IT की वर्चुअल मशीन रख रखी है, इसमें सेल्स की वर्चुअल मशीन रन कर रही है, इसमें मार्केटिंग वालों की VM को हमने स्टैब्लिश कर रखा है. गॉट इट? अब थिंक अबाउट कि इसमें हमने IP अपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, नाम किसी में दिया ही नहीं, तो IP एड्रेस में भी चेंज हो सकता है. IP एड्रेस बदल जाए, या IP एड्रेस आपने मैनुअल स्टैटिक भी रख दिया, तो उसमें याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. सो व्हाट यू यस नीड टू डू, आप IP तो रखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने इसका 15 दे दिया, राइट, और IP तो रखेंगे, प्लस वी आल्सो नीड टू स्टैब्लिश अ नेम, कि ये नेम हमारा होगा ESXi -HR, ठीक है, या ESXi IT, ESXi sales. इससे बेनिफिट क्या होगा कि IP कुछ भी बदले, वी नीड टू एक्सेस अवर ESXi थ्रू द नेम. उसकी IP कुछ भी बन जाए, बट इसको जो हम एक्सेस करेंगे ना, वो थ्रू नेम करेंगे. इज इट फाइन? यस सर. देखिए, जब आप ESXi में vCenter ऐड कर लेते हैं, तो vCenter एबल टू मैनेज लॉट्स ऑफ थिंग. vCenter सर्वर जब आप एक्सेस करेंगे तो 10 से 15 ESXi लिस्ट आएगी, तो उसमें ढूंढ पाना मुश्किल रहता है थोड़ा सा IP के थ्रू, कि हाँ किसकी IP एड्रेस क्या है. फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी कि आप मल्टीपल ESXi को बार बार चेक कर रहे हो, उसके अंदर इंस्टेंसेस चेक कर रहे हो कि कौन सा इंस्टेंस है हमारा HR के लिए. नेम रहेगा, इमीडिएटली आप फाइंड कर देंगे कि दिस वन इज फॉर दिस ESXi इज अप्लीकेबल फॉर our HR department, this is for sales department, this is for IT department, like that. That's why it's really important for us. We should know about how to manage the name resolution for ESXi. Clear? यस सर. So we have all the setup. This is our ESXi host, and this one is our domain controller. Domain controller that we established with name of let me check. I think cloud.com के नाम से रख रखा है. Yes, cloud.com. I'm going to log in it. डोमेन इंस्टॉलेशन में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? इट्स जस्ट अ बेसिक स्टेप दैट वी नीड टू यूज टू एस्टैब्लिश आवर डोमेन कंट्रोलर. यहाँ पे कोई कंफ्यूजन डोमेन इंस्टॉलेशन में?
No, sir, I don't. Confusion. I don't think कोई issue होना चाहिए इसमें. Sir, If you have I have not worked on any of those. So just can you show it once again, like about, what exactly it is? about the domain installation. Yes. Okay, so domain installation will take time up to 15 to 20 minutes. Let me check. Let me check because we need to install a new server 2016. क्योंकि ESXi 7.0 के लिए 12 काम नहीं करेगा. You must need to install 2016. Let me show you the step how we can install the AD services. थोड़ा सा just initializing. Let me verify the name. CMD 95 1.95 ncpa.cpl. Okay, let me explain you about the concept of a domain, and after that move ourselves to the conversion. Think about the domain. Gaurav, do you have idea about the domain? Sorry, Sagar, आपको problem है domain से? सर मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है सर. No, I'm not talking about the problem. Means you want to see the practical from scratch again. For the domain installation. About domain installation, yes. सर वैसे मुझे तो रिक्वायर्ड नहीं है सर, मैं तो डोमेन इंस्टॉल करता रहता हूँ. अच्छा, आप domain की profile पे. Gaurav, just wanted to know about means like आपको means just need to know about आपने domain environment पे थोड़ा बहुत work किया है क्या? नहीं मैंने दिस डोमेन साइड का कुछ अभी तक टच भी नहीं किया है सर मैंने. आई वॉज इनटू कोर नेटवर्किंग, मतलब सिर्फ राउटिंग स्विचिंग पे था. नथिंग ऑन द सर्वर साइड. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टुवर्ड्स द सर्वर साइड. Okay. देखो, fine. As you know that with the help of routing, switching, our network protocol, our network devices, we are able to manage the entire network. आप रिस्पॉन्सिबल हो कौन सा पोर्ट ब्लॉक करना है, कौन सा अलाउ करना है, VLAN क्या होता है, you know about how to configure our switches, router, everything. Is it correct? Yes. But think about the floor. आप नेटवर्किंग से पूरी परमिशन या पूरा का पूरा ओएस नहीं कंट्रोल कर सकते. यू नो वेरी वेल अबाउट. आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे नहीं है. ओएस कर पाए विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस. आप चाहे फायरवॉल की बात कर लो, स्विचेस की बात कर लो, फायरवॉल से भी आप ओएस नहीं कंट्रोल करते हैं. जो फायरवॉल के अंदर सर्विसेज हैं कि आपने वेबसाइट ब्लॉक कर दी, इस कैटेगरी की सारी वेबसाइट ब्लॉक होनी चाहिए, ये पोर्ट नहीं काम करना चाहिए, लॉजिकल पोर्ट हम अलाउ नहीं करना. आई थिंक दीज ऑल आर द फीचर्स व्हिच इज कंटेन्ड बाय our network devices. Is it correct? Yes sir. Think about आपके पास multiple clients है. Windows 10 पे कोई रन कर रहा है, कोई 11 पे रन कर रहा है, and you need to block the control panel of our Windows 10 operating system. स्विच तो इसमें हेल्प करेगी नहीं, राउटर तो इसमें हेल्प करेगा नहीं, ना ही कोई फायरवॉल के अंदर कोई फीचर है कि विंडोज 10 का हमें कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है, उसका डेस्कटॉप ब्लॉक करना है, या उसकी नेटवर्किंग को ब्लॉक करना है, राइट क्लिक ब्लॉक करना है. आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन उसमें मिलेगा, राइट? That's why you are responsible to manage the entire network. This is your organization, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज लगे हैं ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको नेटवर्क में रखना, right? But domain admin की क्या responsibility है? For example, these all are the client computers. ये अपने पास client machines है, ठीक है? और client machines में it may be Windows 10, it may be Windows 11, और कुछ भी हो सकता है. It's depend upon you. These
all are considered as a client machine. इनको हम क्या बोलते हैं? Client PC बोलते हैं. And if we talk about the server computer, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में एंटी सर्वर से स्टार्टिंग हुई थी इन द ईयर ऑफ 1995. ये पहला वर्ल्ड वाइड ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज में जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. उसके बाद तो बहुत सारे हैं. वी हैव अ सर्वर 2000, 2003, 2K8, 2012, 2016, you know that. ठीक है. 2019 और लेटेस्ट में अभी 2020 है ना. दिस इज द लेटेस्ट वन. ये सबसे पुराना, यू कैन से दैट फर्स्ट वन. ये माइक्रोसॉफ्ट ने पहला सर्वर इंट्रोड्यूस किया था इन ईयर ऑफ 1995 एंड दिस वन इज आवर लेटेस्ट वन. द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एडी, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप एडी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एडी मस्ट नीड टू इंस्टॉल ओवर अ सर्वर मशीन. उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. We don't have option to install our AD in our Windows 7 operating system. ये सभी एक ही स्विच से कनेक्टेड है. इट मीन्स दैट बोथ मशीन्स आर इन अ सेम नेटवर्क. क्लाइंट और हमारा जो सर्वर है वो सेम नेटवर्क में है. आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल 2016. यहाँ पे इनफ है. और इस 2016 की मदद से, इसके अंदर जो फीचर है उसकी मदद से हम अपने सभी क्लाइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. नॉट ओनली द क्लाइंट मशीन, इवन you can control your printer, you can control your biometric device. DVR अगर आपने लगा रखा है तो आप DVR को भी कंट्रोल कर सकते हैं. Is it correct? N number of things you can control through the domain controller. आपने ESXi लगा रखा है. ESXi So को when you कंट्रोल, say control, does it mean is it like you have access to take remote of that machine, something like that, or it is just to give permissions? That's it. That is how it is. रिमोट पार्ट इज अ वेरी सिंपल. रिमोट तो बहुत छोटी चीज है. अगर हम बात करें सॉरी permissions की, तो yes we have option to delegate the environment. Got it? You can control everything what you want to do. Means आप सब कुछ उसमें मैनेज कर सकते हैं. Like आपको लगता है कि जो हमारा विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंट्रोल पैनल हमें नहीं एक्सेस करने देना है. ठीक है. आपको लगता है कि नहीं उसमें वॉलपेपर हम चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, या फिर आप उसमें राइट क्लिक ब्लॉक करना चाहते हैं. एवरीथिंग, क्लाइंट कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कब लॉग इन कर रहा है, उसको लॉग इन करने में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें हम मैनेज कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. लॉग्स निकालना हो गया, उसमें क्या इशू आ रहा है उनको मैनेज करना हो गया, वो सारी चीजें हम कंट्रोल कर पाएंगे. इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. ठीक है यहाँ तक. Yes, sir. चलो let's talk about, let's proceed with next. So what I did, I have already installed a server 2016 and इसके ऊपर हमने एक domain install कर रखा है. Let's talk about the procedure how to install domain. So domain installation के लिए आप ये server manager है, which is a server manager wizard that can help us to install any server services. तो अभी हम यहाँ पे AD की बात करने वाले हैं. Just need to click add role and features. Next. Is this server 2016 or 2012? 2016, sorry. Okay. Now click next. Sir, And you have that option, right? Select server. Just can you click previous? sorry. Can you click previous once? Okay. What is this operating system? This current operating system is that, or do we need to select some other? Like we need to add some other operating system over here?
For example, no, it says that select server from server pool, right? So what server is it? Is this the same server, Windows 2016 जो आप हो? Is that the one? same one. Okay. So कुछ करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे. Not required. We just need to install our AD. We just need to install server 2016. हमने 2016 को install किया, right? Install करने के बाद add role and feature. This is the built-in feature of server manager. Next. Select the server pool. So we have only one server. तो जाहिर सी बात है more than one server हम select नहीं कर सकते. Means if you have a multiple server तो यहाँ पे list आ जाती है. अभी हम केवल इसी existing server को proceed करते हैं. Next. And अब देखिए यहाँ पे we have a one option with name of ADDS. Second service which is Active Directory Domain Services. वो जो install बोल के दिया है वो. Correct. Okay. Means I have already installed it. So what you need to do, you just need to select it. आप इसको select करेंगे, next करेंगे, next and install का option आ जाएगा. That's it. आपका डोमेन नाम सब देना वो सब बाद में यहाँ पे इस विजार्ड में नहीं आएगा ना? नहीं, वो promote के केस में आएगा. Means we need to promote it. The first step install, second step promote the server. Oh, okay. Okay. And this you're installing it in hypervisor or Windows 2016? Is this gonna be installed in hypervisor or is it gonna installed in workstation pro? I installed in workstation. It's fully depend upon you कि आपको कहाँ पे install करना है. Hypervisor पे भी install कर सकते हैं और इस पे भी. Oh, okay. Okay. Clear? So now we have already installed it. इस पे हमने ये किया. उसके बाद promote का option आता है यहाँ पे. So in case of promotion, जब आप promote करने का काम करते हैं किसी भी instance पे, तो उस केस में आपको ऑप्शन देगा कि आप कौन सा नेम रखना चाहते हैं. We just need to assign the name cloud.com, class.com, training.com, anything you can configure. And once I, for example, if suppose I had bought a domain or something like that, I add it here. उसके बाद will I be able to take access of that domain even from outside the internet as well? You need to configure. Yes, if you want to configure the manual domain, means if you have already purchased the domain, ठीक है, godaddy.com से या किसी भी location से, so yes, you can access from anywhere. You need to configure a VPN or you can configure a what we can say that static IP address with forwarding, IP forwarding. Okay, could you please show, possible for you to show it here? Like what exactly need to be done? We need to uninstall it. Install it. सिर्फ uninstall करने के बाद ही वो options आएगा? हाँ, उसके बाद ही आएगा. Okay, no worries, sir. Let's in that case I will try to deploy this in my lab, and maybe in the next class if I need anything, can you help me out? Do one thing. Let's remove it and try to install again. No? इसको हम अभी यहाँ पे uninstall कर लेते हैं. Let's start from scratch again. OS है ये अपने पास. We just need to demote it. इसको हम यहाँ से remove कर देते हैं. I need to install again. Proceed to removal. After removing this, will that affect your lab or something like that? We will lose our AD services. But as such कोई इसमें है नहीं, तो not an issue. So when you lose your AD services, it's just that when you're trying to access a domain or something like cloud.com or something like that, that will not be resolved. That's it, right? Not resolved. We are unable to do anything with client.
मतलब users will not be able to access anything. करेक्ट, क्योंकि यूजर ही डिलीट हो जाएगा ना जब आप एडी अनइंस्टॉल कर देंगे, तो वी विल लॉस्ट द एंटायर यूजर्स, जो भी यूजर्स हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे. So when if suppose users are actively working on something and it gets deleted, then is it like Correct. complete shutdown of the PC? Yes, it's a completely demotion of our AD. And what about the user? They will at least they have access to the client machine, or the client No. machine itself will get deleted. Exactly. No client can access the no client can access the Active Directory users. Okay. Sorry, like these are like bit new to me. Not an issue. It's really important. Otherwise, फिर vCenter समझने में दिक्कत होगी. Okay. अगर आप AD नहीं समझेंगे तो definitely it will impact to our vCenter services, ना? इस AD server को access करने के लिए normally it has to come through administrator itself, or can we assign the same domain to this AD server also? We just need to open our server directly, and by selecting the option of tools, it gives us our entire information about the AD. Okay, now so our server is fully free, means इसमें से हमने AD की सारी services हटा दी है. तो let's check how we can install it from scratch again.
Okay, so we successfully uninstalled the entire services of domain controller. I'm going to start from very basic. Without domain, I think we need to remove the roles again. Okay, we successfully uninstall. Let me restart our system. It's mandatory क्योंकि अगर हम restart करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी सर्विसेज को आसानी से रिमूव कर देगा. The moment you uninstall this AD service, all the other services like DNS or maybe LDAP or whatever it is, everything will get removed. Exactly. जितनी भी AD से associated services रहेंगी, all will be removed. Okay. यहाँ पे documentation कुछ है क्या, which states like what services is interdependent, something like that? In case of for the domain management, Yes. I need to check. कुछ document है, but उसके लिए हमें MCSE का document prefer करना पड़ेगा. Oh, you have a different course for that, like MCSE? Exactly. MCSA is a totally different. MCSA, Okay. you know, I think it is categorized in 3 different certification. अभी तो इन्होंने चेंज कर दिया. AG 800 and 802, ठीक है. Azure में आ गया वो AG 800 and 802, which is the certification for domain management. अजोर के लिए क्या पहले अजोर फंडामेंटल का कोर्स है या हम डायरेक्ट अजोर एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं? नहीं. सी फंडामेंटल फॉर जो जस्ट बीटेक पास आउट करके आए हैं अभी. सॉरी सर, रिपीट करें. फंडामेंटल उनके लिए हैं जो बीटेक पास आउट करके आए हैं और जो मींस try to understand about the cloud technology. They don't know about the virtualization. They don't know about the domain and networking. उनको फंडामेंटल से स्टार्ट करना चाहिए. Right? If you have an idea, basic idea of networking, आपको थोड़ा सा सर्वर का आइडिया है, बैकअप का आइडिया, you can directly proceed with admin. Not required to understand about the fundamental. सर इसके बाद करवा देना सर अजोर एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा प्लान है सर. हाँ ठीक है, वर्चुअलाइजेशन का आपको आइडिया लग जाएगा. यू हैव आइडिया अबाउट द डोमेन एंड एडी सर्विसेज, तो डेफिनेटली सर हमारे यहाँ है अजोर एडी ना, तो काम भी है, तो करने को मिल रहा है थोड़ा बहुत कुछ. नहीं सही है. कोई ना कोई क्लाउड तो एटलीस्ट होना चाहिए अभी करंट टाइम में, जो भी यस रिक्वायरमेंट आ सर. रही है ना. सो यू नो दैट सर हर एक, इवन माय ऑर्गेनाइजेशन आल्सो स्टार्टेड टू वर्क ओवर एज्यूर. कुछ ऐसे सर हम क्लाइंट लोग हैं भी हमारे. काफी क्लाउड पे मूव हो गए हैं, वैसे काफी कुछ जा रहा है हमारा क्लाउड में. Exactly, and it also help you to understand about the mailing services. Office 365 to 99% जो है लोग प्रिफर करते हैं कि हम अपना खुद का सेटअप रखें ऑफिस पे. That means I might have a long way to go. I have हमारा product Azure, GCP, Linux cloud, you name the cloud, we are deploying it on all the clouds. So Docker पे है, Kubernetes है. So I think I have to go through almost everything. हाँ, एक्चुअली क्या है, वी टॉक अबाउट द क्लाउड प्रोवाइडर्स, ठीक है ना. तो जो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, लाइक एज गूगल क्लाउड है या फिर जीसीपी है या अदर जो क्लाउड सर्विसेज है ना, उस केस में अगर आपने एक क्लाउड से स्टार्टिंग की तो डेफिनेटली वो जो बाकी के क्लाउड प्रोवाइडर है उसमें अंदाजा लग जाता है कि कैसे
इसका टास्क परफॉर्म करता है। हम लोग की वजह धीरे धीरे प्लान करके ये सच्चाई खत्म करके सब क्लाउड पे जाने की प्लान कर रहे हैं धीरे। हाँ ठीक है, इसलिए तो मैं भी सोच रहा हूँ सर कि कोई अज़ूर का कुछ तो करें। okay, now our server is fully blank, means we don't have any AD information. How you can verify? आप tools पे click करेंगे ना, अब देखिए we are unable to find any option. We are unable to find any option related to the Active Directory user and computer. तो यहाँ पे AD user की कोई भी information नहीं आ रही, even वो icon ही गायब हो गया. So that means all the options which are available in tools, it is like those are like installed services. The entire AD services which is available in tools. नहीं मतलब tools में जो information दिखाएगा, it basically means that only those services are installed. Am I right? Yes, the services, the roles are features that you install. Yes. Okay. So let me install from scratch. Okay. हमें यहाँ पे install करना है. So as we discussed, we just need to click add role and features. Next. Next. And we just need to check mark it as it sorry, Active Domain Services. You just need to check mark to install. Next. 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 Uninstall. सर आपके डेस्कटॉप पे एक सर्विस दिख रही थी अज़ूर AD कनेक्ट, सर वो किस काम आती है वो सर्विस है? जो Azure वो AD जो Connect, Azure AD Connect can help us to synchronize our users from on-premises AD to Azure AD. तो सर अज़ूर AD के लिए सर मतलब ऑन प्रेम रहेगा ही रहेगा या सब कुछ On-premises, see, our domain, we established our domain before 10 years, right? यस सर 10 यस साल सर पहले हमने डोमेन इंस्टॉल किया था और 10 साल से लेकर अभी तक हमने उसमें आई थिंक मे बी 500 यूजर्स आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन ऑन प्रोमाइसेस एडी. यस 500 सर हजार यूजर्स हमारे पास ऑन प्रोमाइसेस पे एडी में अवेलेबल है, राइट? सो यू नो दैट वांट टू यूज द सेम यूजर ऑन एज्योर पोर्टल. हम एज्योर पे फिर से वो यूजर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं. नो वन कैन क्रिएट यूजर ऑन एज्योर अगेन. फिर आपको दो जगह पे मैनेज करना पड़ेगा ना चीजों को, which is really difficult. तो सर मतलब आज की डेट में अगर हम मान लो अपने अज़ूर AD पे सर कोई यूजर बनाएंगे वो हमारे ऑन प्रीम पे आएगा अपने? नो, ऑन प्रोमाइसेस पे जो यूजर बनाएंगे वो एज्योर एडी पे जाएगा. वो अज़ूर पे जाएगा, वाइस वर्सा. सिंक्रोनाइजेशन वन वे होता है. ठीक है, हाँ मैं समझ गया सर. जैसे ऑफिस 365 में कोई ग्रुप बनाते हैं तो वो मेरे लोकल AD पे नहीं दिखता है, हाँ जो मेरी ऑन प्रीम की AD है, तो वैसे ही यूजर के साथ भी है कि मैं ऑफिस 365 भी मैनेज करता हूँ सर थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा काफी देख लेते हैं.
Now we successfully installed. Now what we need to do, we need to promote it. Promote it in the sense कि अब यहाँ पे डोमेन हमें डिसाइड करना है जो भी डोमेन अपने परचेज कर रखा है. So we are able to find three different options. The first one is add existing domain जो है नहीं. We need to proceed with add a new forest which is this is our first domain controller. So यहाँ पे नाम दे देते. I want to install with name of cloud.com. So normally it can be anything, right? .com, .org, or .xyz, something like that. Must need to use dot और उसके बाद कोई सा भी option. अगर ये सर चाइल्ड डोमेन होगा तो ये हम लोग कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? Second one. सेकंड वाला ना? हाँ, बीच वाला. Sorry, what? I didn't get you. Actually, we have option to configure एक PDC बनता है. This one is PDC, parent domain controller. एक BDC बनता है which is backup domain controller. और एक CDC बनता है which is considered as a child domain controller. No, the MCSA के केस में n number of domains are available means we need to establish multiple domain services. So if one domain goes down, it can work on second domain. That is how it is configured, right? Correct. You can say that it's a kind of backup domain controller in case of पहले domain में कोई problem आए तो दूसरा domain उसको take care कर दे. Now, provide the DSRM password that can help us to restore in case अगर कोई problem आ जाती है उसको restore करना है तो it can help. Next. Next और यहाँ पे कर देंगे install. So now you have used this cloud.com, right? So so this is like for local users you can give this, am I right? I mean all those who are in under your uh, same domain or under the same ESXi host or uh, all the uh, all the pieces which are able to communicate to ESXi host or this domain controller, only for that you can give. It Correct. cannot be used online, right? Correct. Okay. If suppose you have bought a domain or something like that, then you will be able to use it. Sorry, could you please repeat again? If suppose you have bought the domain, वो GoDaddy से या Actually, we need to buy the domain from godaddy.com or another location if you want to establish any kind of application or website. ठीक है? अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करना है या फिर आप कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं then only we'll proceed with the public domain. Otherwise private domain के केस में enough है, you can use the no need to purchase a domain. Directly इस private domain के environment से इस domain से private हम इस्तेमाल करते हैं. suppose you are installing multiple servers here,
in your environment, and in that there are a couple of customers who are trying to access this particular server. Mhm. Then a public, that domain is required, right? I mean the public domain. Not public domain required. You can say that. In this case, we just need to configure VPN. VPN के जरिए, फॉर एग्जांपल आपका जो डोमेन है वो ऑफिस इन्वायरमेंट में है, ऑफिस प्रीमाइसेस पे है, ठीक है, and now we started working from home, right? And Yeah. you want to join your server, you want to join your laptop with the office domain, तो उसके लिए VPN की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, not a public domain. Oh, okay. मतलब यहाँ पे public domain, it is only used for website hosting only. Application and website hosting, yes. और वो भी external users को देना है तो ही, internal users के लिए नहीं चाहिए वो भी. नहीं, इंटरनल के लिए वो भी नहीं चाहिए, प्राइवेट केस के लिए वो भी नहीं चाहिए. Okay. सर और एक पब्लिक डोमेन लिया है, फॉर एग्जांपल abc.work बोल के. So if suppose I have like 4 or 5 servers, so can I use it something like server 1 dot abc dot work, server 2 dot abc dot work, or server 3 dot abc dot work, something like that? Yes, which is we have a one record. The record name is cname, that is used for the canonical name, means which is used for alias. Okay. So in this, we need to we are able to do that. मतलब सर इनका क्वेश्चन जो था वो डीएनएस में हमें सीनेम रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे उसके अगेंस्ट में, करेक्ट है? सही सही है. So in which DNS? In our organization's DNS में वो record बनाना पड़ेगा या जो जहाँ से भी लिया है GoDaddy or whatever it is, वहाँ पे Yes. CNAME record? Now we need to configure it on premises domain, and फिर उसके लिए हम same, which is considered as a वाइल्ड कार्ड एंट्री. जब आप मल्टीपल डोमेन नेम इस्तेमाल करते हैं ना एक ही सर्वर के लिए, तो आपका वाइल्ड कार्ड कहलाता है. नॉर्मल डीएनएस की जो डोमेन की कॉस्ट होती है वो बहुत ही नॉर्मल रहती है, लेकिन अगर आप उसी के केस में आप वाइल्ड कार्ड परचेज करेंगे तो 3 से 4 गुना ज्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा. Okay. For example, you are planning to purchase a cloud.com, right? This is our single domain controller. For example, इसकी कॉस्ट जो पड़ रही है वो 1000 रुपीज के आसपास है, ठीक है. और नाउ यू आर प्लानिंग टू परचेज की cloud.com के साथ abccloud.com या समथिंग आप ऐड करना चाहते हैं, तो विच इज कंसिडर्ड एज ए वाइल्ड कार्ड, और इसमें जो पेमेंट जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000. Okay. Okay. But we can set up all those things in our own organization without paying anyone, right? करेक्ट.
लोकल के लिए not required to purchase or pay anything for public provider. ओके ओके। क्योंकि मेरा काम लाइक आई हैव टू गो थ्रू ऑल द पैकेट कैप्चर्स, वो सब है। So I do not understand how this works. So until unless I do, I will not be able to like analyze from where it is coming, how it is coming, what exactly need to be checked. Sorry, repeat again. नहीं सर, मेरा काम ये है कि लाइक आई हैव टू लाइक लोड बैलेंसर पे काम कर रहा हूँ, सो आई हैव टू एनालाइज ऑल दिस पैकेट्स, सो फॉर दैट आई नीड टू टेस्ट इट इन माय होम लैब। सो होम लैब में ये सब करके आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द पैकेट फ्लो गोज ऑन। But it's correlated to the networking, right? No any operating system come into the picture. सी ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, लाइक सर्वर रहेगा, आई हैव टू गो थ्रू HTTP HTTPS DNS records. So I have to go through all the packet captures of those and I have to understand क्या हो रहा है वहां पे, लाइक सर्वर गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है या क्लाइंट गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है या हमारा डिवाइस गलत इंफॉर्मेशन भेज रहा है। सो इट इज लाइक अ प्रॉक्सी व्हाट वी यूज। सो प्रॉक्सी के लिए क्लाइंट की तरफ एक कनेक्शन TCP कनेक्शन रहेगा और सर्वर के तरफ दूसरा TCP कनेक्शन रहेगा। Correct. So when any packet comes to us from the client और proxy होगा, so सर्वर की तरफ भेजते वक्त हमने जो इंफॉर्मेशन भेजा है वो सही है या नहीं, so वो सब एनालाइज करना रहता है। Okay, understood. टिपिकली कॉपी पेस्ट हो जाता है, मतलब यहाँ का इंफॉर्मेशन वहां तक हो जाता है। फॉर एग्जांपल customer might come to us, come to load balancer as HTTPS request, but backend में हम लोग उसको कन्वर्ट करके HTTP में भी भेज सकते हैं। Okay. So वो सब होता है, like we had this active we had couple of cases with the Active Directory where information was like not communicating properly. Uh, so that's the reason I wanted to know like in depth what exactly happens there. Okay. Actually, in case of server operating system, we have a number of things to learn. Right? AD is just a starting. Means without AD, we are unable to perform lots of tasks. So if you want to perform that DNS activity or another policy, group policy, so in this case, we must need to set up our AD first. बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए AD के केस में, तो but AD is a really important part. Okay. Now our domain is ready to use. Let me check. Cloud.com is available and we configure the IP address 192.168.1.95. Now our responsibility, यहाँ पे हमारी जो responsibility है ना, we are planning to convert our ESXi host. So now I'm just going to take the RDP of our ESXi, not RDP, just access the GUI of our ESXi host.
this is our ESXi host, and I'm going to convert from I'm going to make it member of our domain controller. जो डोमेन हमने तैयार किया है उसका मेंबर क्रिएट करते हैं, इसको उसका मेंबर बनाते हैं. So how we can identify कि आपका जो ESXi वो डोमेन मेंबर है या नहीं. So see, we are able to find in case of host, we just need to click manage. Under the manage, user and security, और ऐसे वैसे ये डोमेन का मेंबर है ऑलरेडी. लेट मी रिमूव इट. ठीक है. इन केस ऑफ join domain, we don't have any domain information. So it's our responsibility कि जो हमने डोमेन अभी तैयार किया है उसको यहाँ पे कनेक्ट करें. The benefits of our domain joining, इसका नेम रेजोल्यूशन वो होगा, और प्लस जो हम AD से यूजर क्रिएट करेंगे, we will use the same user to convert, right? We will use the same user to join our to open our ESXi. तो इसमें ESXi में ऐसे ही मैनेज हो सकता है कि किसी को एक होस्ट का एक्सेस देना है, किसी को दूसरे होस्ट का एक्सेस देना है, मतलब जो भी मेरे डोमेन एडमिन हो गए. सॉरी, एक ESXi दो ESXi को एक्सेस देना, मतलब सर मल्टीपल ESXi होस्ट है, तो किसी को मतलब 3 है, तो किसी को एक ही ESXi होस्ट पे ही देना है डोमेन एडमिन को, किसी को 2 पे देना है, तो वो भी हम परमिशन मैनेज कर सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है. yes we can. किस यूजर को क्या राइट्स देने हैं वो भी पॉसिबल है. Okay. चलो, RH enter to convert our ESXi to, we want to make it member of domain controller. So let's talk about the procedure. क्या क्या स्टेप हमें यूज करने पड़ेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ेंगे. Let me access our ESXi DCUI panel. This one is our ESXi host. Make sure कि आपका जो ESXi host है वो प्रॉपर तरीके से डोमेन से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है. F2 प्रेस करेंगे and log in your ESXi using DCUI page. This one is our DCUI panel. I need to log in through remote पे है तो थोड़ा सा इसमें इशू आता है DCUI panel ओपन करने के लिए. Okay, this is our DCUI panel. Select network configuration. We are able to find option of configure network management. IPv4 पे जाना है आपको. You need to configure manual IP address. अब देखिए यहाँ पे static IP address 192.168.1.15 और ये हमने IP address configure किया. We have option of DNS configuration, right?
तो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी आपका डीएनएस का आईपी एड्रेस है, जैसे 95 आपका आईपी एड्रेस है डीएनएस का, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द प्राइमरी डीएनएस. सेकेंडरी डीएनएस कोई है नहीं, तो यू नो दैट सेकेंडरी डीएनएस के केस में what you need to do in case of secondary DNS, we just need to provide Google address 8.8.8. ये Google का एड्रेस है, और होस्ट नेम जो आपको रखना है, दिस इज आवर होस्ट नेम हाइफन ESXi हाइफन होस्ट, ये हमने होस्ट नेम दे दिया. एंटर. कस्टम DNS सफिक्स ESXi, प्रेस एंटर. नो नीड टू डू एनीथिंग. ये आप सेटिंग करने के बाद स्किप बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेव कर सकें. वाई टू सेव दैट. बैक टू द GUI पैनल. एक बार फिर से इसका GUI एक्सेस कर लेते हैं वेब क्लाइंट के जरिए. एंड इन दिस पेज व्हाट वी नीड टू डू, we just need to open security users and मेन पेज पे ही आना है. मैनेज के ऑप्शन पे सिक्योरिटी यूजर पे जाएंगे, ज्वाइन डोमेन, और यहाँ पे डोमेन का नाम cloud.com, यूजर नेम एंड पासवर्ड अपने एडमिन का, जो भी रूट अकाउंट है ना उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे हम. क्लियर? यस सर. सिंपल स्टेप, क्लिक ज्वाइन डोमेन. It is in progress, so we'll take our time. सिर्फ डोमेन सर्वर का पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड देना रहेगा. Like you don't have to like assign create a user ID in AD server, something like that. Correct. Now our system is successfully joined with the domain controller cloud.com, and now you are able to use your Active Directory user to manage our means you can say that our ESXi host. हम अपने ESXi host को proper तरीके से manage कर सकते हैं, means related to the user and all. Is it okay? यस सर. Okay. So can we take a small break and then connect again, then discuss about the user management? Oh, sure. Yes, sir. ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं. We'll meet at 10. Is that okay? हाँ हाँ, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं. Okay. This conference will now be recorded. For second step, what I'm going to do, जो डोमेन कंट्रोलर है ना, इस डोमेन कंट्रोलर पे हम एक यूजर क्रिएट करते हैं. ओपन योर डोमेन कंट्रोलर AD सर्वर जिसको हमने बना रखा है, एंड देन टूल्स पे जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे, cloud.com यूजर्स. एक यूजर बना लेते हैं जस्ट ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस. I want to create a user with name of GCP
and AWS. दो यूजर तैयार कर लेते हैं यहाँ पे. We will use the same user. इन यूजर का इस्तेमाल करेंगे हम to access the ESXi host. AWS and GCP दो यूजर हमने तैयार किए and we want to access the same user through our ESXi. So very basic step that you need to use, just need to open ESXi panel, and in the ESXi panel we just need to click on host, go to the action. Under the action एक option दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे permissions का, right? We just need to click on permissions, select add user. These three different are built-in user, DCUI user, root user and VPX user. ये तीन हमारे पास built-in user है and we need to create our own user जो हमने अभी user AD में तैयार किया है. We want to access the same user in our ESXi management. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? We just need to use option of add, और यहाँ पे जो user आपने create किया, like we created a with name of GCP, right? GCP at cloud.com including with domain name, ये आप यहाँ पे mention कर देंगे. Then what you want to make, यहाँ पे देखिए multiple roles are available, like trusted infrastructure administrator, no copyright administrator, no access, and read only, or you want to make it administrator. Okay, these all are the options which is available. And if you want to configure your own, if you want to configure your own environment, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, you just need to select your own custom पे जाकर. What is the difference between that administrator and infrastructure, trusted infrastructure administrator? Administrator which is contain the full rights, right? Administrator Okay. only which is contain the full rights, but trusted infrastructure administrator, they are not able to perform entire task. बहुत सारी सर्विसेज जो वो टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा. Okay. Clear? Now what I'm going to do, I'm just going to make it read only. यहाँ पे हम इसको read only बनाना चाहते हैं, right? GCP user able to perform the read only task. Click add user. We successfully added one user with name of GCP. Click close. Now I want to log in it. Login करने के लिए we just need to open another browser, 192.168.1.15. I don't want to log in through root. हमने GCP यूजर बनाया तो GCP यूजर से लॉगिन करते हैं. And we configured our user as a read only, right? हमने अपने इस यूजर को जो परमिशन दे रखी है which is a read only, so you are unable to perform the task. I don't think कि यहाँ पे हम कुछ भी कर पाएंगे. मॉनिटरिंग पर्पस के अलावा कोई भी टास्क यहाँ पे So पॉसिबल at नहीं. least were there any virtual machines inside it, or there was no VMs in that? I think we don't have any virtual machine. Okay. Correct. So
हमने जो राइट्स दिए हैं इसमें वो केवल रीड ओनली एक्सेस है, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे यू कांट डू एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द परमिशन फ्रॉम रूट। इस यूजर को हम थोड़ा सा परमिशन इसकी बढ़ाते हैं। जीसीपी यूजर, डबल क्लिक असाइन रोल। I want to make it administrator, ठीक है? I want to make it administrator, assign them. Refresh the page. We are able to access each and everything. You are able to perform the task just like a root. अब जिस तरीके से root user perform कर रहा है task, as it is up, task perform कर रहा है। Is it okay? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो AD के यूजर से हम, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से हम वी आर एबल टू मैनेज लॉट्स ऑफ थिंग। मीन्स प्रॉपर कंट्रोल करना, पासवर्ड भूल गए या कोई दिक्कत आ गई तो उस केस में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, राइट? Okay. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No, No, sir. sir. चलिए, अगला स्टेप है एनटीपी सर्विस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। नेम रेजोल्यूशन हो गया। नाउ टॉक अबाउट सर डीएनएस वो भी दिखा दीजिए सर एक बार। ओके। डीएनएस बहुत ही सिंपल है। आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए ESXi host.cloud.com, दिस इज आवर डोमेन नेम, राइट? दिस इज आवर ESXi होस्ट नेम। बैक टू द सर्वर, और इस सर्वर पे अगर आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो आप ESXi host cloud.com, तो हमारा फुल नेम है, FKDN नेम है, बट हमारा जो सिस्टम है वो रिजॉल्व हो रहा है। Is it like automatic or Automatic, no need to do anything. this host name? Like when we are installing ESXi, we have to just give the host name over there. Correct. Okay. Now, if you go to browser and type esxi-host.cloud.com, it We are able to access it. okay. Yes. Now, next step, time management, NTP services. So for the NTP services, what you need to do, you need to activate the timing from your server. gpedit.msc एक छोटी सी कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी रन पे। It will redirect you on page of our group policy, local group policy management. कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सिस्टम का। अंडर द सिस्टम हमें मिलेगा विंडोज टाइम सर्विसेज। डबल क्लिक, टाइम प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे एनटीपी सर्वर को आप कर देंगे इनेबल विंडोज एनटीपी क्लाइंट, इनेबल विंडोज एनटीपी सर्वर, दोनों को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। क्लियर? नो नीड टू डू एनीथिंग। ये एक्टिवेट करने के बाद बैक आ जाएंगे।
एग्जीक्यूट अ कमांड जीपी अपडेट, यहाँ पे एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे जीपी अपडेट के नाम से, एंड ओपन services.msc, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे विंडोज टाइम सर्विसेज, विंडोज टाइम सर्विसेज रीस्टार्ट। अभी जो टाइमिंग है अपने पास 9:45 इस केस में दिखा रहा है, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हम टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 10:16। You need to manage the time. बैक टू द क्लाइंट कंप्यूटर। अब आपको ये टाइमिंग कैसे मैनेज करनी है क्लाइंट के लिए, सेट द टाइमिंग ऑन योर सर्वर एज इट इज बैक टू द ESXi क्लाइंट। जो भी इंस्टेंस आपने बना रखे हैं उस इंस्टेंस की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एडिट सेटिंग, VM ऑप्शन एंड VMware टूल्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टाइम का, सिंक्रोनाइज गेस्ट टाइम विद होस्ट। ये आप सेलेक्ट करेंगे एंड सेव करेंगे। ओके, विंडोज 7 में थोड़ा सा इशू है, लेट मी सेलेक्ट अनदर वर्चुअल। डन। सिंक्रोनाइज करने के साथ साथ वी नीड टू कॉन्फ़िगर वन मोर पार्ट। होस्ट पे जाएंगे, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट मैनेज, और सिस्टम में पहले ही ऑप्शन में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें, विच इज डेट एंड टाइम, एडिट NTP और मैनुअल NTP। आई वांट टू स्टार्ट इट स्टॉप मैनुअली या होस्ट के साथ ऑन हो, और यहाँ पे अपने NTP सर्वर का IP यानी डोमेन का IP। दैट्स इट। अब जो वर्चुअल मशीन है उसकी जो टाइमिंग है इस Sir, that IP सिस्टम, would be Windows Server's IP, right? NTP वहीं पे चल रहा है, NTP Okay. सर्विस रनिंग ऑन विंडोज सर्वर 2012, तो आप उसी का IP प्रोवाइड करेंगे। एंड नाउ So it is स्टार्ट। as good as you're using the same IP for almost all the services. It's just that the ports vary, right? Internally. करेक्ट करेक्ट। Okay. So now we completed the part of our, as per the agenda, we completed the part of our name resolution,
users management and policies and TP, left with vCenter server. ठीक है, so last topic है vCenter server. means in vCenter server हमें क्या करना पड़ेगा, we need to establish a high configuration system, और उस हाई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पे हम अपनी vCenter सर्वर्स को इंस्टॉल करने का काम करेंगे. vCenter server is the backbone of our environment, and backbone of our environment in the sense means कि without vCenter server we are unable to perform the task. HA हो गया, DRS हो गया, और जो सर्विसेज है वो मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. So that's why we should need to configure. Sir, is it possible, for example, we are currently running Workstation Pro, and हमने उसमें सिर्फ एक ही VM create किया है जो ESXi, and we allocate all our resources to that, and after that inside ESXi आपने Windows machine बना दिया, सर्वर बना दिया, उसके अंदर ही वो 2016 सर्वर बना दिया. So after doing all those, can we install vCenter server in that same ESXi, or do we need to install vCenter server in some other machine? नहीं, we will install, we can install, but आपको देखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए बेटर. जैसे like what configuration? RAM and CPU must be high. कितना चाहिए रहेगा? 32 minimum. Only अगर हम vCenter server needs 32 GB. वर्कस्टेशन जिस मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं उस पे 32 GB, जो बाकी vCenter सर्वर है उसमें 12 GB, ESXi में 6 GB का और सर्वर में 4 GB का, ये होना चाहिए. Okay. बेस मशीन में कम से कम 32 GB होना चाहिए. I have that. तो इनफ है फिर. Okay. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ESXi environment. और now we need to proceed with the service of our vCenter server. तो अभी हमें डिस्कस करना है vCenter सर्वर का, बट बिफोर दैट यू मस्ट नीड टू परफॉर्म द एंटायर प्रैक्टिकल. अभी तक जो हमने प्रैक्टिकल किए ना वो आप कंप्लीट करो. नेक्स्ट वीक से हम vCenter सर्वर इंस्टॉल करेंगे एंड मैनेज करेंगे, एंड रिक्वायर्ड 2 hours 4 classes to complete all. मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम सारा चीज कंप्लीट करेंगे. क्लियर? मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक सर, मतलब हमारे लास्ट क्लास होगी ऐसा कह रहे हैं वैसे? नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे. हाँ, 4 क्लासेस लगेंगी 2-2 घंटे की. ओके, तो हमारे सर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए. ESXi अभी कवर हुआ है. ESXi में जितनी भी चीजें वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई. vCenter का रिमेनिंग है. vCenter तो ये HDRS वगैरह तो मैनेज करना पड़ेगा. क्लियर? ओके सर. चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा 1 घंटे में, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिकल बाय सेल्फ, राइट? Yes, sure. ओके Sir, one more thing. I was basically testing. मुझे अब आगे टेस्ट करना है थोड़ा